Assalamu alaikum everyone. So today we'll cover absurdism. The literal meaning of absurdism. What is absurdism? Difference between existentialism and absurdism. The theater of absurd. Historical context of absurdism. Writers and their works associated with absurdism. Features of absurdism. So let's begin. First, let's break down the term absurd. The word absurd itself comes from the Latin word absurdus, which means out of tune or incongruous. In the broader sense, it refers to something that is illogical, unreasonable, nonsensical, strange, bizarre. Now, what exactly is absurdism? Absurdism is a philosophical and literary movement that explores the human condition and the search for meaning in a world that appears to be meaningless. It suggests that life is fundamentally absurd, and while we may seek purpose, we are often met with silence from the universe. Now, let's clarify the difference between existentialism and absurdism. The philosophy of the absurd is closely related to existentialism. Both philosophies deal with the themes of meaning and existence. Existentialism focuses on individual experience and free will. In contrast, absurdism acknowledges the futility of this search for meaning, suggesting that the universe is indifferent to our struggles. Existentialists believe करते हैं कि we can create meaning in our lives, while absurdists argue that the search for meaning is itself absurd. To fully understand absurdism, we must consider its historical context. Although the roots of absurdism can be traced to the beginning of 20th century, the movement reached its peak in the years following World War II. Estimated 48 million people in Europe were killed and millions more became refugees. Allied forces liberated the concentration camps at the end of the war. शहर मलबे के ढेर तले हो गए थे. The peace that came after World War II was overshadowed by the fear of an even worse war ahead. This fear made people feel hopeless and like their efforts didn't matter. These world wars had shaken the whole world. बहुत ज़्यादा लोगों की खून रेजी हो गई थी, लोगों में खौफ व हरास फैल गया था. वैसे जाने गई थी तो उस खून रेजी की वजह से लोगों ने ये यकीन करना शुरू कर दिया था कि ये दुनिया बेमानी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस. और वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गए थे. लोग बहुत ज़्यादा एलिनिएटेड फील करते थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते थे. The horrors of war and the questioning of traditional values led many writers to explore themes of absurdity, alienation, and the human condition, which laid the groundwork for absurdism to flourish. Now let's talk about the theater of the absurd. Absurdism refers to all types of work, including fiction, short stories, and poetry that deal with the absurdity of human being. Absurdist plays composed by playwright specifically known as the theater of the absurd. Now, who coined the term the theater of the absurd? Martin Esslin first coined the term the theater of the absurd in his book of the same name, which was published in 1960. The theater of the absurd often features illogical plots, nonsensical dialogues, and characters trapped in meaningless situations. Now let's highlight some key writers and their notable works in the absurdist literature. The first one is Albert Camus. Albert Camus is often regarded as the father of absurdism. Albert Camus' famous work, The Myth of Sisyphus. This essay was published in 1942. Myth of Sisyphus is a Greek myth that tells the story of Sisyphus, who is a king who is punished by the gods. His punishment is to push a boulder up a hill, only to have it roll back down each time. Camus uses this myth to illustrate the human condition, suggesting that we should embrace the absurdity of our existence and find joy in the struggle itself. Another prominent figure in absurdist literature is Samuel Beckett. Beckett's play, Waiting for Godot, tells the story of characters Vladimir and Estragon who are waiting for someone who never appears. It represents the human struggle against the absurdity of life and lack of purpose in life. As we have discussed earlier, the theater of absurd often features illogical plots and characters trapped in meaningless situations.
Another important figure in absurdist literature is Eugene Ionesco. Eugene is renowned for his play The Bald Soprano. This is one act absurdist play written in 1948 and first performed in 1950. It is considered an important work of theatre of absurd. It is known for its nonsensical dialogues, unconventional characters, and exploration of the breakdown of communication. Another important name in absurdist literature is Harold Pinter. Harold Pinter is known for his technique called Pinteresque. His works, The Birthday Party, The Caretaker, and The Homecoming, are considered a significant contribution to the theatre of absurd. Now let's conclude it with the features of absurdism. Absurdism के features में सबसे पहले आता है the absurdity of existence. Absurdist literature centers around the idea that universe is fundamentally irrational and without any meaning, questioning the meaning of life. Absurdist works often explore the human tendency to search for meaning. में कैरेक्टर्स जो हैं मीनिंग की सर्च में होते हैं बट उनको नहीं मिलता मीनिंग और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है और एक एलिनिएशन फील होती है. और अगर हम एब्जर्डिज़म के फ़ीचर्स देखें तो उन फीचर्स में एक फ़ीचर ये भी है कि प्लॉट जो यूज़ किया जाता है उसमें क्लियर प्लॉट्स यूज़ नहीं किए जाते, रादर फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स को यूज़ किया जाता है. और जो रिपीटेटिव एक्शंस दिखाए जाते हैं, सर्कुलर स्टोरी लाइंस होती हैं और कैरेक्टर्स एक तरह से होता है ना, स्टोरी मूव कर रही होती है. इसमें स्टोरी मूव नहीं कर रही होती एब्सर्डिज़म में. एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में स्टोरी वहीं की वहीं होती है, मूव नहीं हो रही और बार बार रिपीट होती चली जा रही, सर्कुलर स्टोरी लाइंस होती हैं. फिर देखें तो डीवैल्यूएशन होती है लैंग्वेज की. लैंग्वेज इटसेल्फ कैन बी सीन एज एब्सर्ड इन एब्सर्डिस्ट लिटरेचर. करेक्टर्स नॉन सेंसिकल कन्वर्सेशंस में इंगेज होते हैं और वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बट वो लैंग्वेज उनकी इनफ नहीं होती टू कम्युनिकेट और इस वजह से इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन. रिपीटेटिव डायलॉग्स और नॉन सेंसिकल कन्वर्सेशंस होती हैं. फिर आता है जी डार्क ह्यूमर एंड सटायर. Absurdist works frequently employ dark humor, irony, and satire to expose the absurdity of human behavior, social institutions, and the human condition in general. फिर another important element is alienation and isolation. Characters in absurdist literature often experience alienation and isolation that also reflects the disconnection between individuals and the world around them, or their inability to connect with others through language or action. ये सारी चीज़ें हम इन वर्क्स में भी देख सकते हैं, जैसे वेटिंग फॉर गोडो है. करेक्टर्स जो हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन कंटिन्यूसली वेटिंग फॉर समवन हु नेवर अपीयर्स. वही प्लॉट बार बार यूज़ हो रहा है, नॉन सेंसिकल डायलॉग्स हैं और एक दूसरे से वो मीनिंग भी कन्वे नहीं कर पा रहे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. इसमें लैंग्वेज जो होती है और कम्युनिकेशन होती है उसका कोई सेंस नहीं होती, सेंसलेस होता है बेसिकली. और इसमें जो एब्सर्डिज़म है, एब्सर्डिज़म लैंग्वेज को फेलियर कंसिडर करता है टू एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. It defies rationalism because it feels that rational thought only deals with the superficial aspects of things. इसी तरह absurdism की अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो मेटामॉर्फोसिस है बाय फ्रांस काफ्का. मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का, उसमें एक कैरेक्टर होता है ग्रेगर सामसा का. सामसा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन इंसेक्ट, इनटू अ बग, लेकिन कोई भी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एलिनिएटेड फील करता है और बहुत ज़्यादा एब्सर्डिटी को भी हाईलाइट करता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की. एक्सेप्ट इट द वे ही इज़ और इस तरह वो बहुत अकेला फील करने लग जाता है और थोड़े दिनों के बाद वो अलग अपने रूम में एक साइड पे हो जाता है और फैमिली भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाती है और ये भी एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी को शो करता है. If you found this video helpful, give it a thumbs up, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe for more literary content. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.